If you look at the company's balance sheet and you find thousands of crores are sitting idle in the bank, what is going to be your opinion? You might be thinking कि yeah, it's right because अच्छा है, cash है ना इस balance sheet में, अच्छा ये asset है. But from an institutional investor's eye point, it is a red flag. So let me tell you how it is a red flag. So first we try to understand. जब भी आप invest करते हो किसी equity stock के अंदर, so the first thing which you expect is that it must generate at least 20 to 25% return on the capital which you are giving to the company in the form of shares. क्योंकि आपको रिटर्न चाहिए तभी तो आप इक्विटी स्टॉक में कर रहे हो, अदरवाइज यू माइट हैव इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक डिपॉजिट एक्सपेक्टिंग 6% रिटर्न, बट यू आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज यू वांट हाई रिटर्न. दैट इज द रीजन. पर अगर यहाँ पे कोई कंपनी आपका कैश है और वो सिर्फ ऐसे ही कैश रिजर्व में रखती है, देन इट इज अ रेड फ्लैग फॉर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. हाउ? सो यहाँ पे होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आईटीसी का स्टॉक इन 2015 एंड 2020 को एक है ना जोन में फिक्स हो गया था. इट वॉज लिटरली स्टैगरिंग इन अ डेड जोन. वाई? लेट मी टेल यू. What happened exactly? ITC was taking free cash flow. Basically, it was taking cash amount from its free cash flow and was investing the same cash into a very low yield mutual fund, and at the same time was also investing in capital intensive business like kind of अपने hotels में invest कर रही थी. So यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो हम ही कर सकते थे. What is the reason why we are investing in your stock? Because we expect return more than 5 to 6%. पर यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ITC was not even able to generate like return more than 5 to 6% because of investment done in such things. तो यहाँ पे इसीलिए the stock literally got punished by the investors. Despite recording profit every year, ITC का stock was literally staggering in a dead zone by the investors. So the final takeaway from this is basically before analyzing any company, you must look at the free cash flows. You must look at the history of the company. How efficiently the company actually allocates its capital is the main question which you really ask to every company. That is the thing. So follow the channel if you like the content.